Now today we will deal with section 153A and section 295A. The purpose of dealing these two sections together is because often you will find that a given set of facts which mandates that the charge of section 153A is to be applied would also happen to have 153B, 505 and section 295A as well, if एनिमिटी दैट इज़ प्रमोटेड इज़ बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स. ठीक है. अब 153A में बहुत सारी चीज़ें हैं. डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी फैलाना, या रेसिस के बीच में एनिमिटी फैलाना, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे एनिमिटी फैलाना, रेसिडेंस के बेसिस पे एनिमिटी फैलाना, लैंग्वेज, कास्ट एसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं 153A में. तो बेसिकली 153A क्या करता है? 153A एक ऐसे कंडक्ट को या ऐसे स्टेटमेंट्स को पनिश करता है जो नफ़रत फैलाते हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच, आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एसेट्रा. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या पेनलाइज करता है ये? इट पेनलाइजेज the conduct which is prejudicial to maintenance of harmony between different religious, racial, language or regional groups or caste or communities etc., or a conduct which disturbs or is likely to disturb public tranquility. तीसरी चीज क्या पनिश करता है? that it penalizes organization of any movement, exercise or drill which intends that participants in such activity shall use criminal force or violence against different religious groups, castes, communities, whether on the basis of religion, place of birth, residence, language, etc. तो प्राइमरली आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है? यू डोंट हैव टू जस्ट रीड द इंटायर थिंग. आई मीन, first of all, you need to read the entire section and then get a crux of it. But when you are writing in the exam or when you are quoting it, you do not have to read the entire thing and just repeat it word by word. You don't have to repeat it verbatim. All you need to do is understand the crux of it. When you are speaking about it, you need to understand crux of it. तो clause A क्या punish करता है? Words either spoken or written or conduct or representations or otherwise anything which promotes or attempts to promote on the ground of religion, race, place of birth, feeling of enmity, ill will between different religious, racial, language or regional groups or caste or communities. Straightforward. Clause B क्या बताता है कि if any person commits any act which is prejudicial to maintenance of harmony or which disturbs or is likely to disturb the public tranquility between different religious, racial, language or regional groups etc. By now you should get the idea कि किन चीज़ों की बात हो रही है. ठीक है. I will not repeat grounds of religion, race, place of birth, residence again and again because it gets a bit ridiculous. Then we come to clause C. Clause C क्या penalize करता है? It is organization of any exercise, movement or drill or any other similar activity in which it is intended that the participants in such activity shall use or train to use criminal force or violence against other communities. अब वो communities क्या हैं? चाहे वो religion के basis पे हो, race के basis पे हो, place of birth के basis हो, etc. So by now you should get an idea. One thing that I would like to state at the very outset before talking about the sentence is that always remember that this section requires sanction. ठीक है. You can file an FIR on this basis. Okay. Investigation can also happen. Okay. Police report can also be sent. Okay. But cognizance cannot be taken without resorting to the procedure of 196 of the CRPC, which mandates that the previous sanction of state or central government is very much necessary for the prosecution under section 153A. If you remember, I talked about 196 while speaking about chapter 6 offences, and you remember that 196 mandates that any court shall not take cognizance of any offence punishable under chapter 6
153A or 295A or subsection 1 of 505 or a criminal conspiracy or abetment for the same unless previous sanction of central or state government is obtained. So primarily for this sections we just need to be confined to 196 CRPC subsection 1. So I have told you, then you need to write it down on your Bayer Act so that you are aware. Every time you are reading the Bayer Act, you should be aware that this is the position of law and these authorities required sanction. That way you won't forget it. So now I'll come to the section and its sentence. 153A में क्या कितनी सज़ा मैक्सिमम दी गई है 153A के लिए. So it prescribes that maximum imprisonment may extend to 3 years or fine or with both. और अगर यही offense is committed in a place of worship या in any assembly engaged in performance of religious worship or religious ceremony, then the punishment will extend to 5 years and shall also be liable to fine. मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप या रिलीजियस सेरेमनी या रिलीजियस असेंबली में ऐसे ऑफेंस कमिट किए गए 153A के, तो सज़ा 5 साल एंड फाइन है, विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड फाइन. वाइल 153A सिंप्लिसिटर कैन ऑल्सो बी as the least can be punished by fine alone. ठीक है. So we have two scenarios. 153A simpliciter can be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both. But if the offense is committed in a place of worship, a religious assembly or during a religious ceremony, then the punishment may extend to 5 years and shall also be liable to fine. So what is the object of section 153A? The object of section 153A is to prevent breaches of public tranquility which might result from excited feelings of enmity between the classes of people. Absence of malicious intent is a relevant factor to judge whether the offense is committed or not. It can be said that to be promoting enmity only where the written or spoken words have the tendency or intention of creating public disorders or disturbance of law and order or affect public tranquility, mens rea has to be proved for the commission of offense. Alright, so always remember that the purpose of section 153A, the very object of section 153A is to prevent breaches of public tranquility which might result from the excited feelings of enmity between the classes of people. अब इसके लिए absence of malicious intent is a relevant factor to judge whether the offense is committed or not. But it can be said that promoting enmity only where the written or spoken words have the tendency or intention to create public disorder or disturbance of law and order or affect public tranquility, the mens rea has to be proved for the commission of offense. ध्यान रखिएगा, इस केस में mens rea प्रूव करना ज़रूरी है कि देयर वॉज अ मैलिशियस इंटेंट और द इंटेंशन टू प्रमोट एनिमिटी. ये कोई एकेडमिक स्टडी नहीं होनी चाहिए. अगर लेट अस सपोज किसी एकेडमिक स्टडी की वजह से एनिमिटी इज एक्साइटेड बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल ऑन वट एवर ग्राउंड्स दैट आर मेंशन्ड अंडर 153A, तो कैन इट बी सेड कि वो 153A में उस एकेडमिशियंस को जेल में डाल देना चाहिए? द आंसर इज ऑब्वियसली नो, बिकॉज देयर मैलिशियस इंटेंट वॉज एब्सेंट. वो एक एकेडमिक स्टडी थी. बट लेट अस सपोज if somebody with a view to create enmity between different classes of people and thereby to disturb public tranquility makes scurrilous remarks about a religious figure makes scurrilous remarks about a religion or makes scurrilous remark about a caste or community with a view to promote enmity and thereby to disturb public tranquility, then that would be covered under 153A. Alright, remember, if the intention to promote enmity is absent, a person cannot be convicted under 153A. Alright, it requires malicious intent. It is necessary and the mens rea has to be proved by the prosecution. So on this point, I want to mention a case law right now
that is Ramesh Chotalal Dalal versus Union of India and others. AIR 1988 Supreme Court, page number 775. In this case, Apex Court held that TV series Tamas did not depict communal tension and violence, and the provision of section 153A of the IPC would not apply to it. It was also held by the Supreme Court that the serial was not prejudicial to national integration falling under section 153B of the IPC. अभी 153B भी पढ़ दूंगा जिससे आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भगवती चरण शुक्ला वर्सेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जजमेंट को अप्रूव किया था, उसका रेशियो अप्रूव किया था और बोला था कि द इफेक्ट ऑफ वर्ड्स मस्ट नॉट बी जज्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ वर्ड्स मस्ट बी जज्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ रीजनेबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फर्म एंड करेजियस मैन. ठीक है, तो किसके स्टैंडर्ड से यू विल जज दैट वर्ड्स को किसके स्टैंडर्ड से जज किया जाएगा? You will judge words from the standards of the reasonable, strong-minded, firm and courageous men, and not from the point of view of those who are weak and vacillating minds, nor of those who scent danger in every hostile point of view. So this is a very beautiful judgment, and the position of law has been aptly elucidated by the Supreme Court. बहुत अच्छे से उन्होंने दोनों पॉइंट को बैलेंस करके बताया कि आप एक एक्सट्रीम पे नहीं चूज करते, यू हैव टू रिजॉर्ट टू द मिडल ग्राउंड. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट यू कैन नॉट जस्ट व्यू these statements or words from the point of view of those who sense danger in every single hostile point of view. Similarly, you also cannot judge the words or statements or conduct from the point of view of those who are of a weak and vacillating minds. So you have to judge from the point of view of those who are reasonable. So there has to be reasonable standards. Those you have to judge from those point of view of people who are strong-minded, people who are firm, people who are courageous. All right. So that is the view that the Supreme Court says that you have to follow. So always remember, the effect of words must be judged from the standards of reasonable, strong-minded, firm and courageous persons, and not from those who are of weak and vacillating minds, nor of those who scent danger in every hostile point of view. So in other words, what is this standard? This is a standard of a reasonable man, of ordinary prudence, as they say in English law, the man on the Clapham omnibus. ये इंग्लिश लॉ का स्टेटमेंट है जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्डिनरी रीजनेबल मैन भी कहा जाता है, उसको इंग्लिश लॉ में कहते हैं द मैन ऑन द टॉप ऑफ क्लैपहैम ओमनिबस. Such reasonable man is reasonably educated, intelligent, but is of a non-descripted person, is of a non-descript nature. That has to be kept in mind. ठीक है, जब भी हम रीजनेबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो रीजनेबल स्टैंडर्ड में हम एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस की बात करते हैं, एक ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड ऑफ एन ऑर्डिनरी एजुकेटेड एंड रीजनेबली माइंडेड पर्सन, उसकी बात करते हैं. ऑल राइट. So before I begin analyzing any further case laws, let me just read you section 153B and 295A. ठीक है, section 153B says imputations, assertions prejudicial to national integration. It says whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise makes or publishes any imputation that any class of persons cannot, by the reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community, bear true faith and allegiance to the Constitution of India as the law establishes, or uphold the sovereignty and integrity of India, or B, asserts, counsels, advises, propagates or publishes that any class of persons shall, by the reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community, be denied or deprived of their rights of citizenship of India. तो जो लास्ट लाइनें हैं ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. क्लॉज ए में क्या इंपॉर्टेंट है? एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अपहोल्ड द सोरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. क्लॉज बी में क्या
इम्पॉर्टेंट है, बी डिनाइड और डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स एट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। क्लॉज 3 में क्या इम्पॉर्टेंट है? क्लॉज 3 में इम्पॉर्टेंट है काउंसिल्स प्लीज और अपील कॉजेज or is likely to cause disharmony or feelings of enmity or hatred or ill will between such members or other persons. ये clause C में important है. So we have 3 scenarios right here. बाकी तो section वही बातें reiterate करता है. तभी मैं कह रहा हूँ जो amended section है ना, ये बहुत अच्छे से drafted नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ का repetition बहुत ज़्यादा है. So you need to keep in mind कि आप एक बार उसको लिखें और फिर उसी के context में चीज़ें define करें. ठीक है. So in clause A what is important? The clause A that is important that the imputation must show that classes of person cannot bear true faith or allegiance to the Constitution of India or will uphold the sovereignty and integrity of India. Similarly, any assertion that any class of person be denied or deprived of their right of citizenship of India, or C makes or publishes any assertion that concerning the classes which is likely to cause disharmony or feelings of enmity or hatred or ill will between members of such communities. तो ये हो गया सेक्शन छोटा. अगर ऐसे आप रिप्रोड्यूस करते, रोट लर्निंग का मेथड लेते, तो क्या होता ना, एग्ज़ाम में अगर आप इसको लिख रहे होते तो आपका सारा टाइम इसी में चला जाता, आप नुआंसेस ना बता पाते. तो इंटेलिजेंट तरीका ये है कि आप एक बार उन रीजनल ग्रुप्स, रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज, कास्ट और कम्युनिटी एक बार मेंशन करें और फिर उसके कंटेक्स्ट में आंसर करना शुरू कर दें. कि आपने हेडिंग लिखी कि रिलीजियस, लैंग्वेज और ग्रुप, या आपने सीधे लिखा कि कोई भी इम्प्यूटेशन कि एनी क्लास ऑफ पर्सनस कैन नॉट हैव एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बी डिनाइड और डिप्राइव्ड देयर राइट ऑफ सिटीजनशिप, और द क्लास ऑफ पर्सनस कैन नॉट uphold the sovereignty or integrity of India, or to cause feeling of enmity or disharmony between the classes of persons. ये सारी चीज़ें 153B पनिश करता है. अब सेंटेंस दोनों का ही सेम है, इसमें भी 3 साल है, 153A में भी 3 साल है, और विद फाइन और विद बोथ. ये 153B सिंप्लिसिटर है. और अगर ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप तो ये भी 5 साल एंड ऑल्सो लायबल टू फाइन में बदल जाता है. सो इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों ही ये सेम है. अब दिखने में 153B और 153A एक जैसे लगते हैं और काफ़ी कुछ इनका एप्लीकेशन भी एक ही तरीके का होता है. बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 153A इज़ अबाउट जस्ट प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. तो वो एनिमिटी को प्रमोट करने वाले पॉइंट को पनिश करता है. बट 153B talks about the imputation or assertions which are prejudicial to national integration. तो हमेशा याद रखिएगा, नेशनल इंटीग्रेशन को लेके बात 153B में की गई है, 153A में नहीं की गई है. 153A is all about promoting enmity between different classes of people, and 153B is about imputation assertions which are prejudicial to national integration. अब बाकी मैंने उसका कंटेक्स्ट बता दिया कि उसको छोटे में कैसे करना है. वो अलग बात है, आप देखेंगे कि जो 153B का क्लॉज C है वो 153A से बहुत कुछ मिलता जुलता है. ऑफ कोर्स मिलता जुलता है, तभी तो इन लोगों का एप्लीकेशन एक साथ होता है लॉ में. यू फाइंड 153A, 153B, 505 एंड 295A एक्टिंग टुगेदर. वो इसलिए एक्ट टुगेदर हो रहे हैं बिकॉज लेजिस्लेचर ने एक ही ट्रांजैक्शन के अलग अलग इफेक्ट को पनिश किया है. ट्रांजैक्शन और इफेक्ट हो सकता है इस केस में एक हो, और होते भी हैं, लेकिन उनके प्रभाव अलग अलग होते हैं. तो उन अलग अलग इफेक्ट्स को भी लेजिस्लेचर ने पनिश किया है. दैट इज़ वाई यू सी अ डिफरेंट सेक्शन फॉर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ द सेम एक्ट. ठीक है, तो इस मामले में थोड़े यूनिक हैं. अब 295A भी मैं पढ़ देता हूँ, जिसको कहा जाता है इंडियाज़ ब्लास्फेमी लॉ. It says, deliberate and malicious act intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious belief. It says, whoever with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of citizens of India
बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, मतलब किसी भी दूसरे तरीके से। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप और अदरवाइज पढ़े ना तो ये ध्यान रखिएगा कि मतलब क्लॉज बहुत वाइड है। Continuing with the section, it says insults or attempts to insult the religious or religious belief of that class shall be punished with imprisonment for a description of a term which may extend to 3 years or with fine or with both। ठीक है, अब हमने सेक्शंस तो प्राइमरली पढ़ लिए, तो मैं इस पर एक आपको एक और बात बता देता हूँ। 153B को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी सैंक्शन दे सकता है फॉर प्रोसिक्यूशन, बट नॉट फॉर द केस ऑफ 153A और 295A सबसेक्शन 1 ऑफ 505 और ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 6, उसके लिए सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। पर 153B और 505 के सबसेक्शन 2 और 3 उसको लेके तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी सैंक्शन दे सकता है अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रीवियस सैंक्शन की रिक्वायरमेंट 153B में भी है। ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे चाहे स्टेट गवर्नमेंट दे, बस ये 153B में एक और अथॉरिटी जुड़ जाती है, वो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ऑलराइट, तो ध्यान रखिएगा 153B को 196 के सेक्शन सब सेक्शन 1A के साथ पढ़ें। ऑलराइट, so now I come back to section 153A. Now the interplay will happen between 153A, 295A and even 505 as well. So now let me just tell you that merely inciting the feeling of one community or group without reference to other community or group cannot attract either of the two sections. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 153A तब नहीं अप्लाई करेगा जब एक ग्रुप की फीलिंग तो अराउज की गई है पर दूसरे ग्रुप का कंटेक्स्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो दूसरे ग्रुप का कंटेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही ग्रुप की, लेट अस सपोज एक कम्युनिटी है या कास्ट है या रिलीजियस ग्रुप है, लेट अस सपोज, या कोई भी रिलीजन है, अब वो जो फीलिंग्स हैं उसको अराउज कर रहे हैं, फीलिंग्स को इंसाइट कर रहे हैं, लेकिन किसी ग्रुप के कंटेक्स्ट में नहीं कर रहे। ये नहीं कह रहे हैं कि लेट सपोज कि ऑपोजिट कम्युनिटी की वजह से आपका ये हाल है, या जो आपकी कम्युनिटी में जितनी भी बुराइयां हैं वो ऑपोजिट कम्युनिटी की वजह से है, या आपके जितने भी राइट्स ले लिए गए हैं वो ऑपोजिट कम्युनिटी की वजह से ले लिए गए। अब ये सारी बात नहीं कही जा रही है, बस इतना ही कहा जा रहा है कि योर राइट्स हैव बीन टेकन अवे एंड यू हैव टू वर्क हार्डर इफ़ यू वांट टू get back your rights. You have to take part in the democratic process. You have to be strong-willed. You have been weak for thousands of years. Let us suppose somebody says that. So he's merely inciting the feelings of one community. But वो दूसरे ग्रुप का या दूसरी कम्युनिटी का रेफरेंस नहीं दे रहा कि इनकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है और देखो उन्होंने कैसे कर लिया और तुमने नहीं किया। तो यहाँ पे 153A नहीं लग पाएगा क्योंकि आपने किसी दूसरे ग्रुप का कंटेक्स्ट नहीं दिया। तो प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन क्लासेस ऑफ पीपल को पनिश किया गया है। तो अगर आप एक क्लास की बात कर रहे हैं और दूसरे क्लासेस की बात नहीं कर रहे हैं, वेदर रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज एक्सेट्रा, तो उसका फिर कोई कंटेक्स्ट नहीं रहता। ठीक है, तब 153A नहीं लगेगा। वैसे ही 153A में और क्या आ सकता है, जैसे कि आप सुनते होंगे महाराष्ट्र में या कई स्टेट्स ऐसे हैं, आई मीन इट इज़ अ वेरी डिप्लोरेबल कंडक्ट कि हम अपने ही सिटीजन्स को बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखते कि कोई नॉर्थ ईस्ट से आया है उसको चाइनीज़ बोल देना, या कोई बिहार से आया है तो बिहारी एज अ स्लैंग वर्ड यूज़ करना। दीज आर वेरी डेप्लोरेबल थिंग। आप स्टेट के नाम पे डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो हाउ कैन इंडियन सिटीजन्स कैन कॉल देमसेल्व्स इंडियन सिटीजन्स? इंडिया में तो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे किसी को चाइनीज़ बुला देना या किसी को लेट अस सपोज वो बिहार से आता है तो बिहार के नाम पे कहना कि तुम बैकवर्ड हो एसेट्रा, दीज आर नॉट गुड थिंग्स। ठीक है, और अगर कोई ऐसा करता है या एक क्लास ऑफ कम्युनिटी को दूसरी क्लास ऑफ कम्युनिटी के खिलाफ भड़काता है, जैसे कि महाराष्ट्र में जैसे शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इन सारी चीज़ों में काफ़ी एक्टिव रही हैं पास्ट में, तो अगर वो कहती हैं कि
let us suppose, make the people of UP Bihar leave Maharashtra, and if they do not, then use violence because they are stealing your jobs. तो ये क्या है? That is incitement of enmity between different groups. ठीक है? Similarly, in fact I remember in 1980s there was this slogan of Shiv Sena, and that was a very derogative slogan about the South community, and that was if I'm remembering correctly, what was it? Yes, the slogan was Uthao Lungi Bajao Pungi. That was the slogan of Shiv Sena, because they were under an impression that South Indians were stealing the jobs of Maharashtrians. Now let me tell you, there is no such concept of South India, Maharashtrians और Delhites और Mumbaikars. ये कोई concept नहीं है इंडिया में. ठीक है? People who have shallow ego frame these types of concept in order to make feel better about themselves. ठीक है? If somebody does not have any achievement so to speak of, so he will cook up these words and say कि I belong to this and this community, or I belong to this and this caste, or I belong to this and this city, and hence I am an elite citizen or an elite person as compared to the rest of the plebeians. So these types of mentality are of a very shallow nature, and they are to be condemned. Always remember, as the members of the legal fraternity, it is our duty to make sure that we never tolerate or never support such a divisive and discriminatory conduct among the citizens. ठीक है? अब सेक्शन 153A के तो नुआंसेस तो यहीं पे ख़त्म हो गए. देयर इज़ नथिंग मच अबाउट इट. 153B भी उसी कंटेक्स्ट में है, सो देयर इज़ नथिंग मच अबाउट इट. अब 295A की थोड़ी हिस्ट्री मुझे आपको बताने दीजिए. नाउ लेट मी टेल यू हाउ 295A वॉज इंट्रोड्यूस्ड. सी 295A was introduced due to a pamphlet that was published that was called Rangila Rasool, meaning amorous prophet, which described the incontinence of Prophet Muhammad, and several persons were charged with section 153A of the IPC. So first case on this point is Rajpal versus Emperor. It was decided on 4th of May 1927. In this case, Lahore High Court held that the man could not be convicted as the attack was only on the founder of the religion, and it did not amount to creating class hostilities or hatred between the classes within the meaning of section 153A. However, in Kali Charan Sharma versus Emperor, on the very year, Allahabad High Court disagreed with the judgment of Rajpal versus Emperor that was decided by Lahore High Court. Allahabad High Court said that if the inevitable consequence of writing is the excitement of feelings of hatred between the followers of two religions, then it must be put an end to. The matter must be judged primarily by the language of the book itself, though it is permissible to receive and consider external evidence either to prove or to rebut the meaning ascribed to it in the order of forfeiture. So these documents which incite enmity or hatred between classes of people are often forfeited by the government. So right now the section for the forfeiture by the government of these types of articles is under section 95 of CRPC. But the point here is not of section 95 CRPC. Point here is that Allahabad High Court in Kali Charan Sharma disagreed with Rajpal versus Emperor, and in accordance to me, Rajpal lays down the correct law. Kali Charan Sharma lays down the correct law, and it is very rightly said that if the writing is such that excites the feeling of hatred between the followers of two religions, then it must be put an end to. All right. So this is very straightforward. These things must be put an end to if the inevitable consequence of the writing is the excitement of feelings of hatred between the followers of two religions. Now that is, I am strictly speaking in the context of section 153A, 153A and also section 295A.
and what it seeks to penalizes. क्योंकि ध्यान रखिएगा 153A हमेशा इनकॉर्पोरेटेड होता है, 295A है, जैसे राजपाल में भी 295A लगा था और 153A भी लगा था, तो वैसे ही कालीचरण शर्मा में भी 153A और 295A भी लगा हुआ था, फिर वो डॉक्यूमेंट्स फॉरफिट भी कर लिए गए थे, वो अलग बात है। तो जब भी मैं इन सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ इन केसेस की, तो आप ध्यान रखिएगा उसमें 153A भी ऑटोमेटिकली लगेगा। अब एक चीज़ समझिए, क्योंकि ये मैटर्स रिलीजियस फीलिंग्स का होता है, फेथ का होता है, तो मियर प्रोवोकेशन इज रॉन्ग. Giving provocation for the sake of provocation is a wrong thing, and it's accordingly punished under the relevant sections of the IPC, especially 295A, if it hurts the religious sentiments of any person, and 153A if the purpose of hurting sentiments of other religion is for the purpose of flaming enmity between different classes of people. In this context, Supreme Court in Veerbhadra Shettiar versus Ramaswamy Naikar observed that Section 295 of the IPC has been intended to respect the religious susceptibilities of persons of different religion, persuasions or creed. Courts have to be very circumspect in such matters and pay due regard to the feelings and religious emotions of different persons with different beliefs, irrespective of the consideration, whether they are rational or otherwise in the opinion of the court. तो कोर्ट कह रहा है कि आपको irrational लग रहा है कोई conduct, कोई ritual या certain things that have to be done in follow a particular religion, अगर कोर्ट को वो irrational लग रहा है तो वो अलग बात है. इसका मतलब ये नहीं है कि it is a charter to ridicule that religion, क्योंकि इन सब मामले में the courts have to pay due regard to the religious emotions and sentiments of different persons and different beliefs, irrespective whether their beliefs stands the scrutiny of the rational mind or not. ठीक है? So keep this point in mind while deciding these types of cases. So in this point, let me tell you one another case, that is N. Veer Brahmam versus Andhra Pradesh, decided on 12th March 1959. It is the judgment of Andhra Pradesh High Court. Now the High Court said that the right of freedom of religion is guaranteed under Article 25 and 26 of the Constitution, and it cited a Supreme Court judgment and said that in that case a person was charged under section 153A and 295A and convicted for having published an article in the paper and a cartoon about a donkey on which the agitation was started by the Muslims of Uttar Pradesh. It was contended before the Supreme Court that section 295A was ultra vires, it means beyond the authority, and it should be struck down because it scuttles the right of freedom of speech and expression guaranteed under Article 19, 1, Clause A, Subclause 1, Subclause A. Okay? The Supreme Court said, in regard to this question, that where the restriction was placed in the interest of security of the state, and where the restriction is made in the interest of public order, such a restriction was reasonable restriction, and therefore it is no longer open to contend that section 295A of the IPC is violative of the fundamental rights guaranteed to citizen under Article 19 of the Constitution. Now let me tell you about a very infamous case. It is also called the Calcutta Quran petition, and the actual name of the case is Chandanmal Chopra and another versus state of West Bengal, decided on 17th May 1985. So what happened in this case? The petitioners in their petition quoted some of the passages from the English translation of Quran and made the following avowments. So what were their avowments? Their avowments were that the offending expressions contained in Quran and quoted in paragraphs 4, 5 and 6 of the petition are the verses which arouses the worst communal passion and religious fanaticism, and which manifest themselves in murder, slaughter, loot, arson, rape and destruction and desecration of holy places in historical times and also in contemporary period, not only in India but almost all over the world.
In this way, the publication of Quran in original Arabic as well as the translation in various languages including Urdu, Hindi, Bengali, English amounts to commission of an offence punishable under section 153A and 295A of the IPC, and accordingly each copy of the book must be declared as forfeit by the respondent, that is the state of West Bengal, under section 95 of CRPC. इसको कैलकाटा कुरान पिटिशन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा. इट इज़ अ वेरी इनफेमस केस. So what did the judge say? The judge said that in my opinion, the Quran being a sacred book and an object held sacred by a class of persons within the meaning of section 295 of IPC, then against such book no action can be taken under 295A. Section 295A is not attracted in such a case. Section 295A has an application in respect of a sacred book which is protected under section 295 of IPC. Any other interpretation would lead to absurdity. If any offense within the meaning of section 295 is committed in respect of Quran, then it is punishable. Such a book gets protection in the view of section 295. At the same time, if it is open to take any such action under section 295A against such book, then the protection given under section 295 will become nugatory and meaningless. In my opinion, passing of such order as prayed for would go against the preamble of the constitution and would violate the provisions of article 25 thereof. Article 25 में आपको पता होगा सभी को इजाज़त है अपना रिलीजन फॉलो करने की, ठीक है. अगर उसके बेसिस पे लेट अस सपोज जो पेटिशन था उसके बेसिस पे फॉर फ्यूचर का ऑर्डर देने का डायरेक्शन दे देता हाई कोर्ट, देन दैट वुड अमाउंट टू व्हाट? दैट वुड अमाउंट टू negation of article 25 and thereby negation of the right to Muslims to practice their religion. All right. So High Court continued and said that the preamble proclaims that India is a secular state. It means each and every religion is to be treated equally. No preference is to be given to any particular religion. No religion is to be belittled. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship are assured. Banning or forfeiture of Quran would infringe that right. Such action would amount to abolition of Muslim religion itself. Muslim religion cannot exist without Quran. The proposed action जो petitioner ने propose किया है कि forfeiture का order दे दीजिए, उसके context में High Court कह रहा है the proposed action would take away the freedom of conscience of the people of that faith and their right to profess, practice and propagate the such religion. Such action is unthinkable. The court cannot sit in judgment on a holy book like Quran, Bible, Gita and Granth Sahib. For similar reasons, I hold that section 153A of the IPC also does not have an application in the fact of the present case. Apart from anything else, there is no question for forfeiture or banning the said book on the ground of disharmony or feelings of enmity or hatred or ill will between different religions or communities. This book is not prejudicial to the maintenance of harmony between different religions. Because of Quran, no public tranquility has been disturbed up to now, and there is no reason to apprehend any likelihood of disturbance in future. On the other hand, the actions of the petitioners may be said to have attempted to promote, on the ground of religion, disharmony or feelings of enmity or hatred or ill will between religions, that is between Muslims on one hand and non-Muslims on the other, within the meaning of section 153A. Similarly, in my opinion, it may be said that by this petition the petitioner insult or attempt to insult the Muslim religion and the religious belief of Muslims within the meaning of section 295A of IPC. It is an affront to Islam's supreme scriptural authority. For this reason, the contention of the respondent that this application is motivated cannot be completely ruled out. तो बाय एंड लार्ज हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि petitioner जो forfeiture का ऑर्डर चाहते हैं, अगर ऐसा हमने अलाउ कर दिया, then that would amount to very negation of the right under article 25. ये दूसरा पॉइंट क्या बोला कोर्ट ने कि courts cannot sit over judgment कि they are deciding how the law of God is supposed to be.
The judges cannot sit in judgment over a holy book like Quran, Bible, Gita or Granth Sahib. They have no authority to do that. Then High Court said that it is not the Quran which is the cause of enmity between different religious groups. It is the conduct, like the petitioners, who seek to create disharmony or feelings of enmity between different religious group, and thereby the petition itself reeks of that it seeks to incite enmity or feelings of hatred between Muslims on one hand and non-Muslims on other, and that is covered within the meaning of section 153A. And similarly, it also amounts to insult to the scriptural authority of Quran, and that is also a violation of section 295A of the IPC. So I think by and large you should get an idea. See, India is a secular state, alright. So here everyone, no matter who he or she is, has a right and freedom to propagate and practice their religion, alright, by the virtue of Article 25. So always remember that the courts are not there just for show. Like these words that are in the Constitution, that the Constitution is secular and Article 25 gives everybody the right to freely practice and propagate their religion. These are not hollowed words, alright. These are not just words. These are the very authorities, and these are the very foundational stones of the democracy of India, alright. So it is very essential that while writing an answer on section 295 and you are mentioning a judgment like this, you need to discuss on Article 25. It is very essential. And often examiners do not ask a question of section 295A because they know that the issue is sensitive and mostly students are not aware of it, so they don't bother asking about it. But if they do in future, then you should be aware about these things, that these are sensitive issues and they have to be handled maturely. So first thing that you need to be aware about, that you need to discuss upon the constitutional parameters first under Article 25 read with Article 19 of the Constitution, and how do you balance freedom of speech with this. So you can see that after analyzing the entire provisions, you can understand that the Calcutta Quran petition was very much motivated, and Chandanmal Chopra and another were actually doing the very conduct which they were alleging Quran does, right? कि मतलब वो वही हरकत कर रहे हैं जो वो बता रहे हैं कि दूसरा कर रहा है. They were promoting enmity and they are saying that other persons are promoting enmity. Now that is a bit of a hypocrisy, and the High Court noted that. High Court को लगा कि ये petition बहुत motivated है, इसका purpose ही ये है कि किसी religious communities के बीच में किसी भी तरीके से आग लगाओ. इसका purpose ही ये है. Now next in point of cases is R.V. Bhasin versus Marine Drive Police Station. It was decided on 6th of January 2010. अब इस जजमेंट में petitioners ने around 600 आयत्स कोट की थी, अराउंड विद आई थिंक 400 हदीथ नरेशंस and some of the Seereth narrations, and on that basis the author of these books, R.V. Bhasin, the appellant, actually sought to promote enmity between different groups. तो वो ये अपनी स्पीच में कहते थे कि देखिए कुरान में ऐसा लिखा है, हदीस में ऐसा लिखा है, तो Muslims cannot be faithful to this country and they have always been violent and nobody is safe around them. अब ऐसे जो तो जनरल उल्टे सीधे एलिगेशंस लगाते हैं, वही लगाए. तो जब हाई कोर्ट ने ये मामला देखा तो हाई कोर्ट के सामने इन्होंने काफ़ी फैक्चुअली ये बहुत करेक्ट थे. फैक्चुअली इन्होंने काफ़ी नरेशन डाला था, आयत्स भी डाली थी इन्होंने, हदीस भी डाली थी, सीरा भी डाली थी. तो आइडोलेटर्स के खिलाफ जितनी भी बातें लिखी थी, ही मेंशन्ड दैट. तो हाई कोर्ट सेड कि आप यहाँ तक तो ठीक है कि यू आर क्रिटिसाइजिंग अ रिलीजन,
दैट इज अ डिफरेंट थिंग. क्रिटिसिज्म अलग होती है, प्रोवोकेशन अलग होता है. Provocation is mocking without any factual basis. Criticism is always based on facts, and it is a restrained criticism that is allowed by a democracy. ठीक है, जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो आप फैक्चुअल बेसिस पे करते हैं, लेकिन आप जब किसी को प्रोवोक करते हैं तो उसको कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं होता है ना. तो हाई कोर्ट कह रहा है कि आपने जो जितनी बातें की हैं, चलो हम उसको ठीक भी मान लेते हैं, लेकिन एक बार ये बोलने के बाद कि आपका राइट टू क्रिटिसिज्म है, यू कैन क्रिटिसाइज एनी रिलीजन यू वांट टू आफ्टर स्टडिंग देयर फाउंडेशनल नेचर एंड आफ्टर स्टडिंग द स्क्रिप्चरल बुक्स एंड अदर ऑथेंटिक बुक्स दैट बिलोंग्स टू दैट रिलीजन, एंड इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज देम यू मे क्रिटिसाइज देम, दैट इज फाइन. बट वट एवर बी योर परसेप्शन अबाउट इस्लाम, to conclude that all Muslims want to eliminate all non-Muslims or that they want to spread Islam all over the world by violence is highly objectionable. Then the High Court said that the author has gone a step further and said that Indian Muslims have given a call to Mughalistan from out of India, and that all Indian Muslims believe that Hindus and Muslims are distinctly two different nations politically, socially, culturally and religiously. The author has stated that Indian Muslims have recommended a plan of action which inter alia का मतलब है among other things, which inter alia includes converting every Hindu to Islam, attacking Hindu temples, abducting Hindu women, thwarting family planning program, etc. It is these statements which are likely to incite people to violence and which may promote violence, enmity or hatred between the classes and communities. And for that purpose, author has also referred to the inflammatory speeches of Osama bin Laden. तो हाई कोर्ट क्या रहा है कि देखिए, यहाँ तक आप किसी को क्रिटिसाइज करें फैक्चुअल बेसिस पे वो बात अलग है, लेकिन आप फैक्ट्स के बेसिस पे नफरत फैलाएं वो एकदम अलग है. कि आपका कोई भी परसेप्शन हो किसी रिलीजन को लेके, इन दिस केस आरवी बसीन का जो भी परसेप्शन हो इस्लाम को लेके, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट उस बेसिस पे कंक्लूड कर देना दैट ऑल मुस्लिम्स आर वायलेंट और दैट ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, दिस इज़ अ रॉन्ग परसेप्शन. आप ऐसा परसेप्शन नहीं बना सकते. दिस इज़ अ वेरी बिगेटेड परसेप्शन एंड दैट कैन नॉट बी अलाउड इन एनी डेमोक्रेसी और इन एनी लीगल सिस्टम विच इज़ गवर्न्ड बाय अ रूल ऑफ लॉ. अब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स को भी नोट किया, कैलकाटा कुरान पटिशन को भी नोट किया और पुराने जजमेंट को भी नोट किया, और फिर सारा एक चीज़ ये बोली कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉशन्ड एवरी कोर्ट दैट डू नॉट इम्पोर्ट योर व्यूज़, मतलब जज की बात कर रहे हैं, डू नॉट इम्पोर्ट योर व्यूज़ वाइल डीलिंग विद स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स को स्क्रिप्चर्स के हिसाब से चलेंगे. अब अ जज और सम अदर अथॉरिटी कैन नॉट इम्पोज देयर ओन व्यूज ऑन द स्क्रिप्चर, कि स्क्रिप्चर कैसा होना चाहिए. देन द हाई कोर्ट ऑल्सो मेंशन्ड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज that there are eternal values on which the constitution of a democracy is founded. Tolerance of diversity of viewpoints and acceptance of freedom to express those whose thinking may not accord with the mainstream are cardinal values which lie at the very foundation of a democratic form of the government. Then, High Court also referred to the Supreme Court has also clarified that Section 295A of the IPC does not penalize any and every act of insult or attempt to insult the religion or religious beliefs of the class of citizen. There must be a malicious intent to outrage the feelings of the class of citizens. That is the reason that counsel in this case submitted before court that books and materials which insult the religious beliefs of Muslims is not an aggravated form of insult. ये काउंसिल ने सबमिट किया था हाई कोर्ट के सामने. तो हाई कोर्ट ने उस पॉइंट को भी इसी तरीके से बोला कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोला कि हर तरीके का क्रिटिसिज्म इंसल्ट में नहीं जा सकता. देखिए, इंसल्ट क्या है? इंसल्ट ये है कि जब आपको प्रोवोक किया जाए बिना किसी फैक्चुअल बेसिस पे. अगर लेट अस सपोज समबडी मेक्स अ रिमार्क अबाउट योर कैरेक्टर और मेक्स अ रिमार्क अबाउट योर कॉम्पिटेंस और मेक्स अ रिमार्क अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस and that is not validated by facts, then that would amount to provocation and there would be a semblance of malicious intent. ठीक है? तो for section 295A के basis के लिए it is the insult that is made punishable but not criticism. अब कोई खराब प्रैक्टिस अगर जहाँ पे भी हो, you can criticize it,
whether people agree with it or not, that is a different thing. But to insult a religious group or to insult someone is a totally different thing. तो हाई कोर्ट ने कहा कि आपका चलिए परसेप्शन इस्लाम का कुछ भी हो सकता है, बट टू से दैट ऑल मुस्लिम आर टेररिस्ट, दैट ऑल मुस्लिम्स वांट टू स्प्रेड इस्लाम वायलेंटली, दैट इज अ बिग लीप ऑफ लॉजिक. तो इन पॉइंट्स को देखते हुए हाई कोर्ट ने बोला कि आपने जो बुक फ्रेम की है, आपने अपना परसेप्शन तो दिया है, लेकिन उस परसेप्शन और जो फैक्ट्स को आप नरेट कर रहे हैं, जो और जिस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, वो आप फैक्ट्स ऐसे दिखाना चाह रहे हैं जैसे कि हर मुस्लिम वायलेंट होता है और हर मुस्लिम फोर्स से दूसरे नॉन मुस्लिम को मारना चाहता है, कन्वर्ट करना चाहता है, या वो ही वांट्स टू कमिट सेक्सुअल ऑफेंसेस. ठीक है, तो ऐसा परसेप्शन वी कैन नॉट अलाउ. दैट इज़ अ बिग लीप ऑफ लॉजिक. सो क्रिटिसिज्म की शील्ड लेके आप अगर इंसल्ट कर रहे हैं या आप एनिमिटी अराउज कर रहे हैं फीलिंग्स के बीच, तो दैट वुड नॉट बी अलाउड. आप फैक्चुअल नरेशन पे क्रिटिसाइज करते तो वो चलता, बट टू से दैट एवरी पर्सन इज लाइक दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बाय नाउ. अच्छा, ये जो सारे केसेस है ना, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये जो ऑथर्स हैं, ये इनके ऊपर 153 और बाकी चीज़ों का चार्ज तो लग रहा है, पर इनका जो मटेरियल है ना वो हमेशा रिवोक किया जा रहा है. तो अक्सर यही सारी चीज़ें क्वेश्चन में होती हैं. तो रिवोकेशन होता है इन सारे ऑफेंडिंग मटेरियल्स का सेक्शन 95 ऑफ द CRPC में, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इज़ ऑथराइज्ड बाय नोटिफिकेशन टू रिवोक दीज ऑफेंडिंग मटेरियल्स जो लेटर सपोज 295A के अंदर आते हैं, 153A, 153B या 292 के अंदर आते, तो उसको रिवोक किया जा सकता है. ठीक है, एंड दैट अथॉरिटीज़ विद द स्टेट गवर्नमेंट. तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई. अभी मैं 95 पे भी आपको थोड़ा गाइडलाइंस दे दूंगा, वैसे उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बस बताए दे रहा हूँ. बट लास्टली आई वॉन्ट टू जस्ट मैंशन वन मोर केस लॉ, दैट इज़ रामजी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. अब इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 295A चैलेंज हुई थी, दैट इट वायलेट्स आर्टिकल 19. रामजी लाल में चैलेंज हुई थी. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, एंड आई थिंक यू शुड मेमोराइज इट. इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट यू कोट इट इन एग्जाम्स अगर 295A का आंसर आता है. ठीक है, तो ओरिजिन वाले जजमेंट्स कोट करने हैं, राजपाल वर्सेस स्टेट ऑफ एम्परर, कालीचरण शर्मा वर्सेस एम्परर, और सॉरी मैंने स्टेट ऑफ एम्परर बोल दिया, इट इज़ राजपाल वर्सेस एम्परर एंड कालीचरण शर्मा वर्सेस एम्परर. ठीक है, और यू हैव टू कोट रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डिसाइडेड ऑन 5 अप्रैल 1957. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर इट वाइल टॉकिंग अबाउट 295A. अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी सेक्शन 295A की चैलेंज की गई थी. अब थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जो पटिशनर था इस केस में, रामजी लाल मोदी, he was an editor, printer and publisher of a monthly magazine which was called Gau Rakshak, and the magazine was devoted to cow protection. So in July or August of 1954, a Hindi daily newspaper named Amrit Patrika of Allahabad printed and published an article or a cartoon about a donkey on which the agitation was started by Muslims in Uttar Pradesh. So it was a very offending thing, and due to that an agitation was started by Muslims of UP. So the newspaper and the pamphlets and all the other offending articles were revoked by the state of Uttar Pradesh, and Ramji Lal Modi was charged with section 153A and 295A of the IPC. So primarily, what was the law point that Supreme Court held? So in Ramji Lal versus State of Uttar Pradesh, Supreme Court held that Section 295A does not penalize any and every act to insult or attempt to insult the religions or religious belief of the class of citizens which are perpetuated with deliberate and malicious intention of outraging the religious feeling of that class. Insult to religion offered unwittingly or carelessly or without any deliberate or malicious intention to outrage the religious feeling of that class are not encompassed within the provision. मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर किसी से गलती से हो जाए या केयरलेसली से अगर किसी रिलीजन की इंसल्ट हो जाए विदाउट देयर बीइंग अ डेलिबरेट और मैलिशियस इंटेंशन टू आउटरेज द रिलीजियस फीलिंग्स, वो इस सेक्शन के परव्यू से बाहर है.
ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म जो फैक्चुअल है वो भी बाहर है, बट आरवी भसीन के जजमेंट को ध्यान में रखिएगा कि क्रिटिसिज्म शुड नॉट बी यूज्ड एज अ वेल टू इंसाइट वन कम्युनिटी अगेंस्ट अदर। वो जहाँ पे हुआ, द मोमेंट you use those facts to incite a community against the other, then you have overstepped the foundations and you would be prosecuted then. So Supreme Court continued, it said that 295A only punishes the aggravated form of insult to religion when it is perpetrated with deliberate and malicious intention of outraging the religious feeling of that class. It is obvious that one who alleges malicious and deliberate act on part of another has to prove it. It would also be necessary to consider as to what act could be said to have been done maliciously. Then it said, malice in common acceptance means ill will against a person, but in legal sense, it means a wrongful act done intentionally without a just cause and excuse. तो malicious word जो use हुआ है वो लीगल सेंस में हुआ है. अ मैन एक्ट्स मैलिशियसली व्हेन ही विलफुली एंड विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज डज दैट एक्ट which he knows will injure another in person or property. The term maliciously denotes wicked, perverse and incorrigible disposition. It means and implies an intention to do an act which is wrongful and the act which is detrimental to another. Where any person willfully does an act injurious to another without lawful excuse, he can be said to have done it maliciously. Whether a person has acted corruptly or maliciously is a question of fact and must be proved by the prosecution. तो ये लॉ पॉइंट है इस पे. तो आपको ये जितना भी लॉ पॉइंट मैंने बताया ये आपको याद करना होगा. इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट यू कीप इन माइंड. जजमेंट भूल जाएं ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि मैलिशियसली प्रूव करना पड़ता है एंड दैट हैज़ टू बी प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. तो अगर गलती से किसी रिलीजन की इंसल्ट हो जाती है देन दैट इज़ आउट ऑफ द परव्यू ऑफ सेक्शन 295A. लेकिन लेट अस सपोज अ पर्सन इंसल्ट्स अ रिलीजन इंटेंशनली विदाउट एनी जस्ट कॉज और एक्सक्यूज, or such person with a wicked intention, with a criminal intention, do a wrongful act or commit a wrongful act which is committed in detriment to the interest of another person, then that would be covered within the term maliciously. So for the purpose of section 295, what has been made punishable is only that form of insult to religion when such insult is perpetrated and deliberated with malicious intention of outraging the religious feeling of that class. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. यहाँ पे एक बाकायदा इंटेंशन होना चाहिए वायलेट करने का रिलीजियस फीलिंग्स का. सो that can be said to be covered under section 295A. तो ये कोई भी बाकी इंसल्ट नहीं आती कि केयरलेसली से अगर किसी रिलीजन की इंसल्ट हो गई या गलती से हो गई then that would not be covered within 295A. It is the malicious intent जो कवर होगा. Similarly, malice in law means what? It means a wrongful act which is done intentionally without any just cause or excuse. ठीक है, इसी सेंस में आपको ये ध्यान में रखना है. तो जब भी 295A की बात करें तो यू ऑलवेज मेंशन रामजी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ये जजमेंट वुड सफाइज विद इन इट सेल्फ. इट इज़ अ वेरी होलिस्टिक एंड कंप्लीट जजमेंट एंड इट लेज डाउन द पोजिशन ऑफ लॉ वेरी अथॉरिटेटिवली एंड स्टिल नाउ till the year 2020 is still holding the position of law. अब सेक्शन 95 ऑफ द CRPC को लेके कुछ गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स वर्सेस संगराज, दामोदर, रूपावती एंड अदर्स, डिसाइडेड ऑन 9 जुलाई 2010. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब 153A का कोई आर्टिकल 153A के एम्बिट में आने वाला कोई आर्टिकल या 295A के एम्बिट में आने वाला कोई आर्टिकल या स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट फोरफीट किया जा रहा है अंडर सेक्शन 95 ऑफ द CRPC, तो स्टेट गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है. फर्स्ट,
The statement of the grounds of its opinion by the state government is mandatory, and a total absence thereof would vitiate the declaration of forfeiture. Therefore, the grounds of the government opinion must be stated in the notification issued under section 95 of the CRPC, and while testing the validity of the notification, the court has to confine the inquiry to the grounds so disclosed. Secondly, the grounds of opinion must mean conclusion of facts on which the opinion is based. Grounds must necessarily be the import or the effect of the tendency of the matter contained in the offending publication, either as a whole or in portions of it, as illustrated by the passages which the government may choose. A mere repetition of an opinion or reproduction of the section will not answer the requirement of the valid notification. However, at the same time, it is not necessary for the notification to bear a verbatim record of the forfeited material or give a detailed gist thereof. तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कह रहा है कि जब ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन मेंशन किए जाएंगे तो पहली बात तो हाई कोर्ट को उसी ग्राउंड्स को टेस्ट करना है, और जो भी ऑफेंडिंग मटेरियल है या मटेरियल्स विच हैज़ द टेंडेंसी टू अफेक्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, वो सारी चीज़ें उसी नोटिफिकेशन में मेंशन होंगी. तो अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई ये भी किया है कि ये सफाइस नहीं करेगा कि गवर्नमेंट अपने ग्राउंड बताए बिना से मटेरियल पोस्ट कर दे. ग्राउंड्स बताने होंगे अलग से कि किस ग्राउंड पे वो मटेरियल ऑफेंसिव है गवर्नमेंट के हिसाब से. दूसरा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट को पूरा का पूरा मटेरियल छापना पड़े. वो उतना ऑफेंडिंग पार्ट भी लगा सकता है जितना गवर्नमेंट को लगे ज़रूरी है. ठीक है. थर्ड क्या है? वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ forfeiture would depend upon the merits of the grounds. The High Court would set aside the order of forfeiture if there are no grounds of opinion, because if there are no grounds of opinion, it cannot be satisfied that the grounds given by the government justify the order. However, it is not duty of the High Court to find for itself whether the book contained any such matter whatsoever. तो मतलब अगर गवर्नमेंट ने ग्राउंड नहीं दिए तो हाई कोर्ट हटा देगा फॉरफीचर का ऑर्डर, और हाई कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बुक को खुद पढ़े और खुद पता करे कि क्या ग्राउंड थे इसको बैन करने के. वी कम टू फोर्थ पॉइंट नाउ. द स्टेट कैन नॉट एक्सट्रैक्ट स्ट्रे सेंटेंसेज ऑफ पोर्शन ऑफ द बुक एंड कम टू द फाइंडिंग दैट द सेड बुक एज अ होल ऑट टू बी फॉरफिटेड. तो मतलब किसी बुक का एक छोटा सा सेंटेंस या छोटा सा पोर्शन निकाल के पूरी बुक नहीं बैन करनी चाहिए. आपको देखना चाहिए किस कंटेक्स्ट में चीज़ें बोली जा रही हैं. फिफ्थ पॉइंट क्या है? इंटेंशन ऑफ द ऑथर हैज़ टू बी गैदर्ड फ्रॉम द लैंग्वेज, कॉन्टेंट्स एंड द इम्पोर्ट ऑफ द ऑफेंडिंग मटीरियल. If the allegations made in the offending article are based on a folklore, tradition or history, something in extenuation could perhaps be said for the author. Sixth point, if the writing is calculated to promote feelings of enmity or hatred, it is no defense to a charge under 153A of the IPC that the writing contains the truthful account of the past events or is otherwise supported by good authority. Adherence to the strict path of history is not by itself a complete defense to a charge under 153 of the IPC. तो ये वही पॉइंट है जो मैं आरबी बसीन के कंटेक्स्ट में मैं बता रहा था कि आप हिस्टोरिकल नरेशन या फैक्ट्स के बेसिस पे अगर नफरत फैलाते हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. एक चीज़ होता है फैक्ट्स मेंशन करना, दैट यू ले आउट द फैक्ट्स एज दे वर. ठीक है. इफ़ यू आस्क मी अबाउट अ फैक्चुअल सिनेरियो, आई विल टेल यू अबाउट द फैक्चुअल सिनेरियो. बट to incite hatred among people on the basis of that facts is a very different thing. That is covered within the expression of 153A. Now we come to the seventh point. The seventh point says section 95 of the code postulates that the ingredients of the offense stated in the notification should appear to the government to be present. It does not require that it should be proved to the satisfaction that all requirements of punishing sections, including mens rea, were fully established. So in other words, what the Supreme Court means कि गवर्नमेंट का सेटिस्फैक्शन क्रिमिनल कोर्ट के सेटिस्फैक्शन के लेवल जितना नहीं होता है, वो सिर्फ अपीयरेंस के बेसिस पे हो जाना सफिशिएंट होगा. अब वो क्रिमिनल लॉ के बेसिस पे हर इंग्रेडिएंट प्रूव होने की ज़रूरत नहीं है. मियर अपीयरेंस वुड सफाइस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 95. Eighth point is the onus to dislodge and rebut the prima facie opinion of the government that the offending publications comes within the ambit of relevant offense, including its requirement of intent, is on the applicant, and such intention has to be gathered from the language, contents and imports thereof. Then we come to the ninth point. It says that the effect of the words used in offending material
must be judged from the standards of reasonably strong-minded, firm and courageous men, and not those of weak and vacillating minds, nor of those who scent danger in every hostile point of view. The class of readers for whom the book is primarily meant would also be the relevant factor for judging the probable consequence of the writing. ठीक है, ये guidelines है for revocation. So primarily we are done with the position of 153A, 295A, 153B. ठीक है, you are done with it. Now we come to another point, that is section 292. Now what does section 292 does? Section 292 is prohibiting sale etc. of obscene books. So for the purpose of subsection 2, it says, I am reading section 292 now, it says, for the purpose of subsection 2, a book, pamphlet, paper, writing or drawing, painting, representation, figure or any object shall be deemed to be obscene if it is lascivious or appeals to prurient interest, or if its effect, or where it comprises of two or more distinct items, the effect of one of such items, if taken as a whole, such as to tend to deprave and corrupt the person who are likely, having regard to all relevant circumstances, to read, see or hear the matter contained or embodied in it. So what does lascivious means? You need to know this first. It is an archaic term which means feeling or revealing an overt sexual interest or desire. That is meant by lascivious. Alright. Now let me tell you what prurient means. Prurient means encouraging an excessive interest in sexual matters. ठीक है, तो sexual matters में अगर कोई चीज़ interest अगर बढ़ाता है, excessive obsession create करता है, तो that can amount to prurient interest. इसको सेक्शन 292 को pornographic material के point of view से भी सोचा जाता है, और it penalizes actually sale of pornographic materials. So if somebody is selling it or lets to hire, distributes, publicly exhibits such material, then he will be punished under 292. तो अब जो subsection 2 है वो कहता है कि whoever sells, lets to hire, distributes such obscene book, pamphlet, paper, drawing, etc., imports, exports or conveys such obscene object for the purpose aforesaid, or knowing or having a reason to believe that such object will be sold, let to hire or distributed or publicly exhibited, etc., or put into circulation. Then clause C says, takes part in or receives profit from any business in course of which he knows or has reason to believe that any obscene objects are, for the purpose aforesaid, made, produced, purchased, kept, imported, exported, etc., or may be put into circulation. Clause D says, advertises or makes known by any means whatsoever that the person is engaged or is ready to engage in such act. ठीक है, अब वही चीज़ें रिपीट की हैं. Then we come to clause E, offers or attempts to do any act which is an offence under this section. तो पहले conviction पे जो punishment होगा, that would be 2 years and fine. But second conviction पे punishment कितना होगा? 5 years and fine. ये बातें याद रखना होगा. तो 292 को अगर आपको याद करना होगा तो ये आप ऐसे याद भी कर सकते हैं. Let us suppose a man is selling pornographic material, then in that case he would be covered within the expression of 292. अब एक explanation दी हुई है, ठीक है, exception दिया हुआ है, sorry. Exception कहता है कि this section does not extend to any book, pamphlet, paper, writing or painting or representation or figure, the publication of which is proved to be justified as being for the public good on the ground that such material is in the interest of science, literature, art or learning or other object of general concerns. Secondly, which is kept or used for the bona fide for religious purpose. तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि लेट अस सपोज इन द बायोलॉजी यू आर लर्निंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सो दैट वुड नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 292 बिकॉज वो एक्सेप्शन में फॉल करता है. इट इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ साइंस. सिमिलरली लेट अस सपोज कि एन आर्टिस्ट इज ड्राइंग और टेकिंग एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द एंशिएंट टेम्पल्स where some of the nude images are present, then that would also
be covered within section, will be covered by the exception of section 292. वो 292 में punish नहीं होगा. Similarly, अगर let us suppose a teacher or a medical science teacher is explaining about sexual education to his students, then that would also not come within the expression of 292. Similarly, exception का clause B कहता है any representation sculpted, engraved or painted or otherwise represented on or in any ancient monuments within the meaning of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Acts, or any temple or any car used for the conveyance of idols or kept for the use of religious purpose also do not come within the ambit of section 292 of the IPC. Alright. तो जनरली एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मियर न्यूडिटी अपने आप में ये नहीं कहा जा सकती है कि इट इज़ लैसिवियस और प्रमोट्स प्रूरिएंट इंटरेस्ट. ठीक है, मियर न्यूडिटी पर से इज़ नॉट पनिशेबल अंडर 292, क्योंकि it could be for interest of science, it could be for interest of literature, it could be under interest for art or learning or for any other object of general concern. It is only that kind of nudity which arouses sexual passions, or which tends to deprave or corrupt persons, or which are obscene and it relates to lascivious or prurient interest. Only that is made punishable under section 292. ठीक है, से वही चीज़ पनिश की गई है. And now let me tell you about the contemporary level कि टेस्ट ऑफ ऑब्सेनिटी और कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है. तो इस पॉइंट पे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा रणजीत डी ओडेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 881. It indicated that the concept of obscenity would change with the passage of time, and what might have been obscene at one point of time would not be considered as obscene at a later period. So judgment gives several examples of changing notion of obscenity, and ultimately the court observed that the world is now able to tolerate much more than formerly, having coming indurate by the literature of different sorts. The attitude, although is yet not settled, but the concept of obscenity would change from the passage of time. ठीक है, इसको कहते हैं कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जज करें ऑब्सैनिटी का लेवल. ठीक है, ये एक चीज़ है. फिर आपके दो जजमेंट्स और आते हैं जिन्होंने रीइटरेट किया है सेम पोजीशन ऑफ लॉ, समरेश बोस वर्सेस अमल मित्र और एस खुशबू वर्सेस कनाई अम्मल. अब इन्होंने भी एम्फेसाइज किया है कंटेम्प्रेरी सोशल वैल्यूज़ एंड जनरल एटीट्यूड ऑफ द ऑर्डिनरी रीडर पे. ठीक है, कि कम्युनिटी के प्रेजेंट स्टैंडर्ड्स क्या हैं उसके हिसाब से डील करिए. इस कंटेक्स्ट में लेट मी जस्ट नरेट यू द पैराग्राफ ऑफ रणजीत डी ओडेशी. उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि द कोर्ट्स वाइल जजिंग वेदर द वर्ड पिक्चर पेंटिंग एसेट्रा वुड पास द टेस्ट ऑफ ऑब्सैनिटी under 292 of the IPC, it has to be seen that first of all IPC does not define the word obscene. ठीक है, पहली चीज़ तो ये है, obscene को define नहीं करता IPC, and it is the delicate task of how to distinguish between that what is artistic and that what is obscene that has to be performed by the courts, and in the last resort it has to be performed and known by the Supreme Court. The test must obviously be of general character, but it must admit of a just application from case to case by indicating a line of demarcation not necessarily sharp but sufficiently distinct to distinguish between that which is obscene and that which is not. None has so far attempted a definition of obscenity because the meaning can be laid bare without attempting a definition by describing what must be looked for. It may, however, be said that at once that treating with sex and nudity in art and literature cannot be regarded as evidence of obscenity without something more. मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि sex and nudity per se is not within the ambit of 292. Something more has to be shown, that it appeals to prurient interest or it is lascivious. ठीक है, that has to be proved.
So test of obscenity must square with the freedom of speech and expression guaranteed under the Constitution. This would invite the court to reach a decision on the constitutional issue of a far-reaching character, and it must be beware that it may not lean too far away from the guaranteed freedom. तो कोर्ट को फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी ध्यान देना है और ये भी देखना है कि जो ऑब्सेनिटी है जो 292 में पनिश की गई है वो भी पनिश हो. तो एक बैलेंसिंग एक्ट कोर्ट को करनी है. दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट. तो इस टेस्ट को लगाते हुए, कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के टेस्ट को लगाते हुए, लेडी चैटरलीज लवर को सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि दिस बुक does satisfies the test of obscenity. In this context, Supreme Court said that in treating with sex the impugned portions of Lady Chatterley's lover and setting of the whole book past the permissible limits judged from our community standards, and there was no social gain to the public which could be said to preponderate the book, and it must be held to be satisfied the test of obscenity. तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली लेडी चैटरलीज लवर का जो बैन ऑर्डर था उसको अपहेल्ड किया. अच्छा, इंग्लैंड ने भी लेडी चैटरलीज लवर को बैन किया था. अब इस नावल में कुछ थोड़े ऑफेंडिंग पोर्शंस थे, एंड नाउ इट वुडंट बी प्रॉपर फॉर मी टू टेल अबाउट दैट हियर, सो आई विल नॉट मेंशन इट हियर, बट देयर वर सम ऑफेंडिंग पोर्शंस इन दैट, एंड इन अ सर्टेन वे those portions were obscene also, and it appealed to the prurient interest as well. All right, so that is why both in England and in India this novel was banned. But how and in what process it was banned, it is very necessary for you to understand. Now Supreme Court ने R versus Penguin Books Limited के जजमेंट को भी रेफ़र किया और उसमें देखा कि लॉर्डशिप्स ने क्या बोला. वहाँ पे बोला कि हिज लॉर्डशिप डायरेक्टेड द जूरी दैट दे मस्ट कंसिडर द बुक एज अ होल, नॉट सेलेक्टिंग पैसेजेस हेयर एंड देयर एंड कीपिंग देयर फीट ऑन द ग्राउंड, नॉट एक्सरसाइजिंग क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट और फंक्शंस ऑफ सेंसर. द फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर पब्लिकेशन वॉज दैट वॉज द बुक ऑब्सीन? वॉज इट्स अफेक्ट टेकन एज अ होल टेंड टू डिप्रेव एंड करप्ट पर्सन्स हु आर लाइकली हैविंग रिगार्ड टू ऑल सर्कमस्टेंसेस टू रीड इट? क्या वो करप्ट कर रही है लोगों का दिमाग, मतलब उस स्टैंडर्ड में, उस कम्युनिटी में जिन लोगों को उसको पढ़ना है. टू डिप्रेव मेंट टू मेक मॉरली बैड. तो डिप्रेविटी की मीनिंग है टू मेक मॉरली बैड, टू परवर्ट और टू डिबेस और करप्ट मॉरली. तो इसका मॉरल से रिलेशन ज़्यादा है. टू करप्ट का मतलब होता है it's to render morally unsound or rotten, or to destroy the moral purity or chastity, to pervert or ruin a good quality, or to debase or defile. So the jury has to actually see that if it was satisfied beyond reasonable doubt that the book was obscene, they must then consider the question of its being justified for public good in the interest of science, literature, art, or other subjects of general concerns. Literary merit were not sufficient to save the book. It must be justified as being for public good. The book was not to be judged by the comparison with other books. If it was obscene, then if the defendant has established the probability that the merits of the book as a novel were so highly that they would outbalance the obscenity, then jury should acquit, otherwise it should convict. तो बेसिकली इस जजमेंट में जो R वर्सेस पेंगुइन बुक्स लिमिटेड है, जो रेफ़र भी किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो इसमें क्या वो बोल रहे हैं? उसमें बेसिकली ये बोल रहे हैं कि देखिए, पहली चीज़ जो जूरी को क्वेश्चन करनी होगी, कि इंडिया में तो जूरी नहीं है, तो जूरी की जो बात हो रही है जजेस पढ़ लीजिएगा इंडिया के कंटेक्स्ट में. तो वहाँ पे यूके में जूरी होती है. तो पहली चीज़ जो जज डायरेक्ट कर रहे हैं जूरी को, वो ये कह रहे हैं कि यू हैव टू फर्स्ट सी कि वेदर द बुक वॉज ऑब्सीन, और उसको ऑब्सीन जाने के लिए यू हैव टू सी कि जब आप बुक को पूरी तरीके से पढ़ते हैं तो वुड इट डेप्रेव और करप्ट द पर्सन्स हु आर लाइकली टू रीड इट. ठीक है, डेप्रेव का मतलब है टू मेक मॉरली बैड और परवर्ट,
करप्ट का मतलब है टू मेक मॉरली अनसाउंड और रॉटन और टू डिस्ट्रॉय द मॉरल प्योरिटी। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि दैट मियर फैक्ट दैट अ ज्यूरी और अ जज विल बी शॉक्ड विल नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि ऑथर्स हैव अ राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बट द पीपल विद स्ट्रॉन्ग व्यूज वर स्टिल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी and were under an obligation to others not to harm them morally, physically or spiritually. तो एक तरफ आपको ज़्यादा प्रूडिश भी नहीं होना है, लिबरल माइंड्स के साथ एक्ट करना है, और दूसरी जगह यू हैव टू आस्क योर सेल्फ whether the tendency of the book was to deprave and corrupt those who are likely to read it. सुप्रीम कोर्ट ने यही स्टैंडर्ड फॉलो किया है, ये भी बता दूँ। और एक बार ये चीज़ आंसर हो गई कि yes it is obscene and it tends to deprave and corrupt the persons who are likely to read it having regard to all the relevant circumstances, तो दूसरी चीज़ क्या देखी जाएगी? दूसरी चीज़ देखी जाएगी कि क्या एक्सेप्शन में फॉल कर रही है, दैट द पब्लिकेशन क्या वो पब्लिक गुड के लिए है, क्या वो इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग या अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न के अंदर आता है, या बाकी की जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं उसके अंदर आता है या नहीं। अगर आंसर है नो तो कन्विक्ट हो जाएगा 292 में। ऑलराइट, देन द कन्विक्शन विल फॉलो। सो यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो रंजीत जी उड़ीसी में लेडी चैटरलीज लवर का पॉइंट था, एंड द सुप्रीम कोर्ट फाउंड कि when you read the book in its entirety, then everything, when we can say so much in its favor, but we find that the sexual connotation and the sexual description in the book pass the permissible limits judged from our community standards, and there is no social gain whatsoever with that. So we must hold the book as rightly banned, and your conviction under 292, Ranjit Rishi's conviction under 292 was upheld. उन्होंने बोला था कि हाई कोर्ट was correct in dismissing your revision petition. अब ध्यान रखिएगा, रंजीत डी उड़ीसी में जो अपेलेंट थे, he was convicted for selling this banned book, ठीक है, तो he was convicted under section 292 of the IPC. तो इन्होंने 292 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की ऑब्वियसली कि इट वायलेट्स आर्टिकल 19(1)A। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो इट डजंट, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का टेस्ट लगाते हुए ये पाया कि जो बुक है वो ऑब्सीन है लिटरली, एंड हिज कन्विक्शन वाज अपहेल्ड। फिर नेक्स्ट इन पॉइंट ऑफ केसेस इज समरेश बोस। अब इस समरेश बोस में क्या हुआ था कि देर वॉज दिस नॉवेल प्रजापति रिटन बाय समरेश बोस। अब इसमें एक रेफरेंस था टू किसिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी एंड फिगर्स ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स इन द बुक एंड सजेशन एज टू सेक्सुअल एक्ट्स। अब ये कहा गया था कि इट टेंड्स टू डिप्रेव एंड करप्ट मॉरली पर्सन्स एसेट्रा, और 292 ये बोला गया था कि 292 का इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होता है। पर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन डॉक्यूमेंट्स को ऑब्सीन नहीं माना था, इस नॉवेल को ऑब्सीन नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लैंग्वेज जो यूज़ हुई है और जो सेक्सुअल एक्ट्स का जो नरेशन है, ये बाय इटसेल्फ हो सकता है रीडर को शॉक कर दे, बट ये अपने आप में ऑब्सीन नहीं है, क्योंकि उसका ग्रेटर पॉइंट अलग चीज़ है, बुक का पॉइंट अलग है। तो रंजीत डी उड़ीसी से जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड था, कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड था, वो बदल गया, ठीक है, टेस्ट वही है, पर ध्यान रखिएगा रंजीत डी उड़ीसी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड एज द टाइम पासेस उसके हिसाब से बदलेंगे। तो कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड क्या होता है कि अगर हम 2020 में जी रहे हैं तो हम 2020 का कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड देखेंगे, ना कि 1960 का। समझ रहे हैं? तो समरेश बोस में जो जहाँ पे कम्युनिटी जो 1985 का केस था, वहाँ पे कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड किस ईयर का लगाया गया? 1985 का। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, हिकलिन टेस्ट क्या होता है। हिकलिन टेस्ट जो ले डाउन हुआ वो यूनाइटेड किंगडम के जजमेंट रेजिना वर्सेस हिकलिन में ले डाउन हुआ। सो रेजिना वर्सेस हिकलिन में क्या ले डाउन हुआ कि द टेस्ट ऑफ ऑब्ससेनिटी इज वेदर द टेंडेंसी ऑफ द मैटर चार्ज्ड एज ऑब्ससेनिटी is to deprave and corrupt those whose mind are open to such immoral influences and into whose hands a publication of this sort may fall.
So the Hicklin test postulates that a publication has to be judged for obscenity based on isolated passages of a work considered out of context and judged by their apparent influence on most susceptible readers, such as children or weak-minded adults. In United States, however, it made a marked departure and felt in US that a Hicklin test is not correct test to apply. And in Roth versus United States, where the Supreme Court of United States directly dealt with the issue of obscenity as an exception to the freedom of speech and expression, the court held that rejection of obscenity was implicit in the First Amendment, noticing that sex and obscenity were held not to be synonymous with each other. The court held not only those sex-related materials which have the tendency of exciting lustful thoughts were found to be obscene, and the same has to be judged from the point of view of an average person by applying the कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स. तो रॉथ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स में कोर्ट ने बोला था कि हिकलिन टेस्ट ठीक नहीं है क्योंकि आप चीज़ों को आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी ले जा सकते हो. तो उन्होंने बोला कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट एकदम सही रहेगा कि हम जिस एरा में जी रहे हैं उस एरा के हिसाब से जज करेंगे कि क्या कोई चीज़ ऑब्सीन है या नहीं. एंड आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट व्यू. रणजीत जी ओडिसी में भी यही व्यू प्राइमरली फॉलो हुआ. सिमिलरली कनाडा में क्या पोजीशन है मैं बता देता हूँ आपको. कनाडा में रेजिना वर्सेस बटलर, in this case the dominant test to decide obscenity was community standards problem test. The Supreme Court of Canada held that the explicit sex that is not violent and neither degrading nor dehumanizing is generally tolerated in Canadian society and will not qualify as undue exploitation of sex unless it employs children in its production. The court held that in order for work or material to qualify as obscene, the exploitation of sex must not only be a dominant characteristic, but such exploitation must be undue. ठीक है, तो ये वहाँ का है कनाडा का. आई एम टेलिंग यू अबाउट द इंटरनेशनल सिनेरियो एज वेल, जिससे आप सारी चीज़ों के बारे में अवेयर रहें. अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंडिया के कंटेक्स्ट में बोलना हिकलिन टेस्ट वुड नॉट बी द करेक्ट टेक्स्ट टू अप्लाई एंड डिटरमाइन व्हाट इज ऑब्सैनिटी, बिकॉज सेक्शन 292 ऑफ द आईपीसी यूजेज द एक्सप्रेशन lascivious and prurient interest and its effect. ठीक है, so it is the lascivious and the prurient interest which are the dominant things that you have to keep in mind, and then you have to see whether it tends to corrupt or deprave the persons who might read such obscene, who might read or see such obscene material. So remember in Avik Sarkar and versus State of West Bengal also, the Supreme Court again reiterated that the Hicklin test is not correct, but rather community standard test is the correct test to determine what is obscenity. A bare reading of section 292 of the IPC makes it clear that a picture or article shall be deemed to be obscene if it is lascivious, if it appeals to prurient interest, and it tends to deprave and corrupt persons who read, see or hear the matter. ये तीन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है. Nothing else is important. These three are the primary ingredients. So once the matter is found to be obscene, the question may arise as to whether the impugned matter falls within the exceptions contained in the section. A picture of a nude or semi-nude woman as such cannot per se be called obscene unless it has the tendency to arouse feeling or revealing an overt sexual desire. The picture should be suggestive of depraved mind and designed to excite sexual passions in persons who are likely to see it, which will depend on the particular posture and the background in which the nude and semi-nude woman is depicted. Only those sex-related materials which have tendency of exciting lustful thoughts can be held to be obscene, but the obscenity has to be judged from the point of view of the average person by applying contemporary community standard. ऊपर से एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो अगर मान लीजिए न्यूडिटी है किसी चीज़ में, तो you have to see it and examine the question of obscenity in the context in which the photograph and the message it wants to convey. ध्यान रखिएगा, मैसेज और कंटेक्स्ट बड़ा ज़रूरी है. उस न्यूडिटी का मैसेज और कंटेक्स्ट क्या है. So when you see in postmortem that there are nude images, so what is its message and context? Its context is to teach you about medical jurisprudence. It is not there to teach you about or you morally or corrupt, to deprave or morally corrupt your senses. It is not there for that.
It is there to teach you about medical jurisprudence, right? If you refer to a book of medical jurisprudence, you will see that there is a nude image galore in that. But the purpose of those images is to actually inform you that what are the relevant nuances of the medical field and how you as a lawyer would need to be aware of it in order to exercise your profession in the best possible way. Alright, that is why lawyers have to read medical jurisprudence. So in terms of message and context, I must also mention you a case, that is Bobby Art International versus Om Pal Singh Hoon. Now, in this case, Supreme Court, while dealing with the question of obscenity in the context of film called Bandit Queen, pointed out the so-called objectionable scenes in the film have to be considered in the context of message that the film was seeking to transmit in respect of the social menace of torture and violence against the helpless female child, which transformed her into a dreaded dacoit. So in the film Bandit Queen, there were scenes of humiliations, stripping the woman naked, making her parade, and in that film there were scenes where the woman was made to draw water from the well within a circle of 100 men, and she was fully naked. And in the film there was exposure of her breast and genitalia to these men, and the context of this nudity was to show to the people that how this entire exercise was to humiliate and degrade her, which led her to become a dreaded dacoit. ठीक है, बैंडिट क्वीन की बात है, फूलन देवी की बात हो रही है यहाँ पे बाय द वे. इस कंटेक्स्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में बोला था कि नेकेडनेस डज नॉट ऑलवेज अराउज द बेसर इंस्टिंक्ट. ऑलराइट, nakedness or being naked does not always arouse your baser instincts, because in this scene the point was in the Bandit Queen, these scenes, the point they sought to convey was that how this reinforced humiliation and stripping a person out of their basic dignity of being a human actually plays a part and plays a role into the protagonist to become a dreaded dacoit. Alright, it is meant to be a story of a dreaded dacoit as to what happened in her past that led her to become that. Now Supreme Court said that a pervert might be aroused by these scenes, but we do not protect perverts. We do not assuage the feelings or susceptibilities of an oversensitive persons. So that was it. The basic of section 292 and the nuances that it contains. There is nothing more beyond that. I have explained you the principles of several case laws. Now you may refer to the judgment of K. A. Abbas versus Union of India I am giving you in your study notes. And you are now aware about the contemporary community standards test, which is the test that shall be applied. Similarly, I have reproduced through the judgment of K. Abbas versus Union of India the guidelines by Khosla Committee. It primarily relates to film censorship, so I think that you should be aware about that if possible. But let me tell you, from the point of view of the exams, nobody is going to ask you about these film guidelines, but you should be aware about these things, that the question of obscenity is involved there as well. Alright, so वहाँ पे भी contemporary society का test ध्यान में रख के लिया जाता है, and that is very essential for you to know. And again, in Directorate General of Doordarshan and others versus Anand Patwardhan, it is a case of Supreme Court decided on 25th August 2006. Again, Supreme Court referred to the contemporary community standard test and then said that how it is to be applied. So we have already discussed with the necessary portions of section 292. I told you about the definition of Hicklin's test and how it is not followed in India and shouldn't be followed in India. And I have told you about the community standards test. I have told you about the message and context that you should see while deciding a case.
And I also told you about the international position and the judgment of Ranjit D. Udeshi versus State of Maharashtra. So that is it. Your law on section 292, 295A, 153A is now complete, and there is nothing further than this that you need to refer. Alright. So your knowledge on these points is entirely complete. Now that is it for today. Okay. I'll see you tomorrow.